So yeah, few days back we visited this place near Namgom, बिपिन के साथ, क्योंकि बिपिन को कुछ बटरफ्लाइज पकड़ना था एंड कुछ कैटरपिलर्स सर्च करना था. चेक कर लेते हैं. कुछ बोल तो. चेक चेक 1 2 3 हेलो चेक आ रहा है. It's always good to be in nature and seeing how beautiful the world is. Especially monsoons में ना दुनिया कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखता है. So we had a really good time. But then उसके कुछ दिनों के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया and just cough and cold. So I was scared and I went into home isolation. But उसके बाद all those thoughts, the news and everything, ये सारा सोच करके मेरा एंजाइटी से एंड घबराहट से मेरा हालत ख़राब हो गया. I was so stressed I couldn't even sleep properly. Then I realized that this fear is very lethal. जॉयस में एक बहुत सुंदर बात को फेयर के बारे में कहती है दैट अगर आप डरे हुए हैं आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते. नाउ आई एम गुड. सिर्फ खांसी है, अदर देन दैट आई एम गुड. बट देन दैट टाइम वाज इनसेन मैन, इट वाज इनसेन. एंड इतना सारा थॉट्स, इतना सारा न्यूज़, इतना सारा बात सुन करके दिमाग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था. द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर फैमिली एंड अदर पीपल ऑल्सो वॉज देयर. And there was this verse in the Bible which says, do not be anxious about anything, but put all your anxiety on him because he cares for you, because Jesus cares for you. And it was tough for me. मेरे से नहीं हो रहा था. I wanted to put my anxiety on Jesus, but it was tough for me. And the second part of that verse helped me a bit. I'm still a weak person in this area. Not that I am, but then that he cares for me. The fact that God sent his only son Jesus on this earth and he died for me and he rose again. He's in heaven and he loves me and he cares for me. And I felt that. And वो मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली को, मेरे को एंड मेरा फ्यूचर को संभाल सकते हैं. बिकॉज ही इज़ गॉड ऑब्वियसली. एंड सो looking at his creation, these birds, these plants, thunder and lightning, somehow I'm trying to understand, grasp this, that how big is my God, and if he cares for me, he'll take care of everything. जब मैं अपना चिंता को उन पर डालूंगा, वो हर एक चीज़ को संभालेंगे, क्योंकि वो उन्हें मेरा फिक्र है. एंड दैट वाज ब्यूटीफुल फॉर मी. इन दिनों में मैंने एक चीज़ को सीखा. एंड या सीखना ही.
He cares for you. Jesus cares for you. uh, I don't know. I don't know how to explain it, but I'm sure if you are willing to know Him, He'll show it to you. Uh, so बस इतना ही. Thank you for listening. If you are listening till now, and God bless you.